Now we will discuss the exercise 5D. Formula used in this we have to use the two formulas in this exercise. We have to use two formula in this exercise. First is AQ minus BQ. First of all, we have to write A and B without power. So A minus B. Then square of the first quantity plus square of the second and plus product of the first and second. यानी हम इसमें सबसे पहले A लिखेंगे, अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन, विदाउट पावर B लिख देंगे, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई। बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ जो प्रोडक्ट है ए बी, ये हमेशा इसके अपोजिट साइन होगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ अगर प्लस होगा तो माइनस। बाकी सारे पॉजिटिव होते हैं, और पहले ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू द फॉर्म जो आपकी गिवन है। अब जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू है तो यहाँ ए माइनस बी होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, देन ए प्लस बी, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा। स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट ए स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द सेकंड प्लस बी स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड विद अपोजिट साइड। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस कंटेन करता है, तो यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट ऑफ ए बी आएगा नेगेटिव माइनस ए बी, ये अपोजिट साइड को कंटेन करेगा, ये ध्यान रखिए। अगर ए माइनस बी है तो प्लस को कंटेन करेगा, ए प्लस बी है तो माइनस को कंटेन करेगा, अपोजिट साइन का होगा, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम है। Question number 1, a to the power 3, 27. First of all, we convert into the both term in 3 power. So it is already given in the in term of 3 power, a to the power 3, 27. We have to write 3 to the power 3. Now compare with the formula. At the place of a minus minus, at the place of b is 3. So now we have to put at the place of a, at the place of b in right hand side, formula number 1. So at the place of a minus minus, at the place of b 3, a square of first, a square, square of the second, 3 square 9, and minus sign को contain करता है तो product होगा positive, 3 into a 3a. Now we will discuss question number 5, 3x 7 by 81 x 4 to the by 4. 3 and 81 both are comes in the table of 3, so 3 taken as the common. First term also contain x, second term also contain x, it contains 7 power, it contains 4 power, we have to take in लेस पावर टर्म को हम कॉमन लेते हैं, तो लेस पावर x की पावर 4 है, x की पावर 4 कॉमन लेंगे। फर्स्ट टर्म ऑल्सो कंटेन बाई, सेकेंड ऑल्सो कंटेन बाई टू द पावर 4, लेस पावर y है तो y कॉमन लेंगे। अब हम कॉमन लिया है तो जितने टर्म में आपने कॉमन लिया है तो कॉमन से वी हैव टू डिवाइड बाई ईच टर्म। सो फर्स्ट टर्म में हम डिवाइड करेंगे 3x7y डिवाइडेड बाई 3x4y, 3 and 3 कैंसिल, x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4, डिवीजन में पावर माइनस होती है, 7 माइनस 4 3 एंड बाई कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइडेड 81 डिवाइडेड बाई 3 27, x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 कैंसिल, ये पावर y टू द पावर इज 4, y टू द पावर 1, सो डिवाइड में पावर माइनस होंगे, 4 माइनस 1 3. So it may be written as 2 to the power 3, 27 by q may be written as 3 by 2 to the power 3. So aq minus bq, at the place of a is x, at the place of b y. So first of all we have to write a minus b, at the place of a x, at the place of b 3y. Now we have to write square of the first x square plus square of the second 3y square 9y square. It contains negative sign, so product will be opposite, plus ab to plus 3xy. Question number 7, a to the power 3, 0.64, a to the power 3, it contains 1, 2, 3. So it will be the 0.4 to the power 3. यहाँ 3 के बाद पॉइंट है, तो जब क्यूब करेंगे तो 0.1 के बाद होगा, 464 किसका क्यूब है 4 का, और यहाँ कितने के बाद है 0.123, तो क्यूब में 1 के बाद होगा, तो 0.4 की होल पावर 3. एट द प्लेस ऑफ ए, एट द प्लेस ऑफ बी 0.4, ए क्यू प्लस बी क्यू, वी हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ए प्लस बी, ए एट द प्लेस ऑफ बी 0.4. The square of the first, a square, square of the second, यानी 0.4 square 0.16, यहाँ पे प्लस है तो प्रोडक्ट होगा नेगेटिव, a इंटू 0.4 माइनस 0.4a. 8aq अपॉन 27 और माइनस bq अपॉन 8. 8aq, 8 is the 8, 2 to the power 3, 8a also has the power 3, and 27
3 to the power 3. So it may be written as 2a upon 3 whole cube. B contain power 3, 8 convert into 2 to the power 3, so it convert into b upon 2 to the power 3. It is a AQ, it is a BQ at the place of A, 2a upon 3 at the place of B, B minus B upon 2. First of all, we have to write A minus B at the place of A, 2a upon 3 at the place of B, B upon 2. After that, we have to write square of the first, 2a square, 4a square, 3 square, 9, square of the second, b square upon 4. It contains minus sign, so product will be opposite, plus, so multiply 2a upon 3 into b upon 2. 2 and 2 cancel, sorry, 2 and 2 cancel, 2a upon 3 minus b upon 2, 4a square upon 9 and b square upon 4 and plus ab upon 3 is our required answer. Now question number 14. 8aq minus bq minus 4ax plus 2bx. 8aq may be written as 2a to the power 3 and minus b to the power 3. First of all, we have to solve first two term only. It is a AQ, it is a BQ at the place of A, 2A at the place of B, B. So we have to write A minus B, 2A minus B, square of the first, 4A square, square of the second, B square. It contains minus sign, so product will be opposite sign. So it here A plus AB, so plus 2A into B, 2AB. Now we will discuss last two term. It is a minus 4, it is a 2. First term 2a is positive, here is the negative, so minus taken as the common, and 4 and 2, so 2 is a common क्योंकि 4 भी 2 की टेबल में आता है, 2 भी 2 की टेबल में आता है, 2 कॉमन लेंगे. It contain x, it also contain x, 2x taken as common, minus minus plus, when we minus 4x divided by minus 2x, it convert into 2 2 ja 4, 2a plus minus, minus 2 cancel, x cancel, b. Now minus 2x into 2a minus b, this term also contain 2a minus b, this term also contain 2a minus b, 2a minus b taken as common, 4a square plus b square plus 2ab and minus 2x. It is your required answer. Number 16, question number 16 is 2x cube plus 54 y cube minus 4x and minus 12y. We have to discuss only first two terms because it contains 3 power, it contains 3 power, but it contains 2, it also contains 54, 2 and 54 are even numbers, so 2 taken as the common, 2 and 2 cancel, x cube, 2 say 54 is 27 y cube. Last two term we see that minus 4 is a common, so x plus 3y. So we have to apply here, it convert into cube, x to the power 3 plus 3y to the power 3. So 2a at the place of a x, at the place of b 3y, square of the first x square, square of the second 9y square, and product of the first and second, but it contains positive, so product will be negative, so it will be 3x minus 3x or y and minus 4x plus 3y. 2 and 4 comes in the table of 2, so 2 taken as common, x plus 3y contain both terms, so x plus 3y taken as common, 2 and x plus 3y cancel, remaining term is x square plus 9y square minus 3xy and x plus 3y cancel minus 4. It is not required. 4. Now question number 18. First part 13 to the power 3 minus 5 to the power 3 is divisible by 8. It is a, it is a b,
AQ minus BQ, we have to write A minus B, at the place of A 13, at the place of B 5. Now we have to write at the place 13 square plus 5 square minus sign है, तो product will be positive 13 into 5. 13 minus 5 8, 169 plus 25 plus 65. 8 has the multiple, so यहाँ पे 8 into में है, तो when be divided by 8, 8 और 8 से cancel हो जाएगा, so it is divisible by 8. Divisible by 8. Now question number 19. 5.67 into 5.67 into 5.67 plus 4.33 upon 5.67 into 5.67 minus 5.67 into 4.33 plus 4.33 into 4.33. Let 5.67 equals to A and 4.33 equals to B. So A, it convert into A to the power 3, B convert into B to the power 3, upon A into A square minus A into B, AB and plus B square. We know that the formula of AQ plus BQ, A plus B, A square plus B square minus AB upon A square minus AB plus B square. This and this cancel. Answer is A plus B at the place of A 5.67 plus 4.33. 7 plus 3 10, 6 plus 3 9 1 10, 5 4 9 10. Answer. First we have 5.67 को A, left 4.33 B. A, AQ, B, BQ, A into A square, A into B, AB and B square. AQ plus BQ, A plus B, A square plus B square minus AB, A or B. Cancel. Last answer is A plus B. We have to put at the place of A 5.67, at the place of B 4.33. Answer is 10. It is your exercise 5D complete. You can do easily. If you have any doubt, please send a message on Google Classroom.